ओके, अच्छा ये लाइव. Okay, so let me share the link. Okay, then we start in a minute. Okay, audible, visible. Okay, just tell me. Let me confirm करेंगे, and then we start immediately. Okay, just tell me about the audio, but that's then we'll start in a minute. Okay, okay, everybody's come. Okay, can we start, everyone? Okay, chalo. Okay, I think I forgot to share the link in one group. Let me just share it. Everybody has to be active, please. Okay, we'll start with the revision first, and then I'll go ahead. Okay, I'll also tell you what exactly are we supposed to do today, and then we'll start. Okay, chalo, good to go. Okay, very good afternoon to everyone. CA into audit revision for Jan 25. Already the first part is uploaded. So I've taken a couple of questions over there, approximately 25 30 questions. In this also we are going to do the same thing. But this part two is basically your module first, which is your main objectives, audit evidence, risk assessment, and all that questions are over here. Okay. So we are not going into ABCDs of everything, but we are going into this. That is important question answer. Okay, because at the end of the day, everybody will chalk out onto this only. What are the important question answers? Audit you might be doing from the module, you might be doing from the notes, but at the end of the day, if you have not done the questions enough, so आपका exam में pen भी हिलेगा नहीं. Okay, so it's a very clear cut understanding. Please do all the questions, all the important questions, especially your past RTPs and your past suggestion answers. Okay, and this is a compilation of both your suggestion answers and your RTPs. Okay, chalo. Now, before I go ahead into this, this is what we're going to do today. Let me just give you a basic highlight, and then I'll. Okay, sure. So this is what we are targeting today. These are the chapters. So if you're watching this for the first time, the part one is already uploaded. You might see it in the live tab of Hgpa YouTube. In that we cover documentation and all the chapters in the module number. Okay, so this is what we will be covering today. Remember one thing: every chapter is important. ऐसा नहीं कि आपको कुछ ड्रॉप करके जाना है. Many students also message me and say कौन सा chapter ड्रॉप कर सकते हैं क्या? Nothing you can drop. The only thing you need to do smart study in audit. So it's a complete theory subject. You sit anywhere. Obviously, वो आप रट्टा मारेंगे, बट मेरे हिसाब से आराम से जितने सेट ऑफ क्वेश्चंस है फ्रॉम एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आउट ऑफ द एंटायर लॉट, यू नो वन थिंग, these two chapters are top priority. Risk assessment, audit evidence, very big chapter and very important chapter also. Okay, but having said all of that, the first initial chapter of your audit, which is obviously your nature, objective and scope, and planning wala part. Okay, these are also relevant questions, have come 8 to 10 marks question आते हैं. So please ये question हम करेंगे. We start from there only, and then I will go step by step. Everyone ready? You can keep your notes ready. You can keep stick notes. If you think something is very different, something outside the box we should write, then please go ahead and write it. Okay, chalo. But I'll be asking a lot of questions to you, so I want everybody to be very active. Okay, chalo. Chapter number one, we'll start off with nature, objective and scope of audit. Okay? Basically इसमें ऐसे 200 के जितने भी हैं वो यहाँ पे बीच बीच में आपको ऐसे भी पूछूंगा. I'll ask a lot of essays, so please be very sure and please be very first one comment in that if you know the essay. Okay, चलो.
Nature, objective, scope, and audit is the first question on your screen. M Motors Limited is leading Indian automobile manufacturer with many offerings across commercial, passenger, and electric vehicles. The company is pioneering India's electric vehicle transition and enjoys considerable advantage in one of the fastest growing automotive markets. It's all the story. The basic thing is what they'll ask you a question down, but we will read the entire question. Okay. GR and Associates have been appointed as the stat auditors for year 22-23. JNK and newly appointed audit assistants in the firm and a part of engagement team constituted for purpose of audit of 10 motors. However, यहाँ से शुरू होता है आपका actual में question, तो please आप ध्यान देंगे everybody. However, they are confused about what such an audit tends to achieve. They perceive audit as a guarantee against possible errors or frauds in FS. Do you agree the perception of both the assistants? In this context, outline the objectives of an independent audit conducted in accordance with the standards of auditing. Okay. So in the entire stuff, आपको एक ही बताना है उन assistants को कि audit का perspective क्या है, उसका objectives क्या है. Okay. Before I go on to the answer, let us discuss a few things, a very general thing, and then we'll go ahead. Okay. So now, boss, if I talk about the standards of auditing, आपने last time भी किया था and classes में भी you knew everything. Okay. So जो आपका 200 का series है, ये आपका overall objectives. Okay. 220, 210 your engagement, 220 your quality, 230 your documentation, 240 your fraud, 250 compliance, pay attention please, 260 communication with those charged with governance, and remember one thing, 265 communicating internal deficiencies with TCWG, and 299 that is your joint audit. Okay, now the point is what we're talking about this. Okay, हम लोग ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. So जब भी overall objectives का बात आता है, दो ही pointers है, we'll do it in a minute, but before that also important है, मैं आपको ही पूछूंगा, tell me one thing, then audit, whenever we are giving any assurance, there are two types of things. Okay, so do we give absolute assurance or do we give reasonable assurance? Give me an answer please. Do we give absolute assurance or do we give reasonable assurance? Sir, the answer is going to be reasonable assurance. Okay, the answer is going to be reasonable assurance. मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, जो पहला वाला चैप्टर है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. इनफैक्ट आई हैव टेकन ऑल द वैरायटी इंक्लूडिंग मॉडल क्वेश्चन आल्सो. तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका, आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है सर, एनी ऑडिटर विल नेवर गिव एब्सोल्यूट इवन इफ ही इज वेरी 100% डैम श्योर अबाउट ही इज डन एवरीथिंग. लेटेस्ट कि उसने पूरा का पूरा सैंपलिंग किया, 10 वाउचर थे, 10 के 10 चेक किए, उसे कुछ नहीं मिला, बट वो कभी भी गारंटी देगा नहीं. he will never write in his auditor's report what कि I give complete guarantee, अगर कुछ होता है तो मेरे पास आ जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला. Okay, he will always give reasonable assurance. Okay, number one, when I talk about objectives, so obviously you have to see one thing, you're independent, you have followed all the essays, आपका quality control है 220 के हिसाब से. Okay, चलो now we go on to the question. Okay, सबसे पहले ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो पहले चैप्टर में बहुत ही रिपीटेटिव है. In fact, you will get this question every now and then. Okay, so in conducting audit of FS, the objectives of auditor in accordance with SC 200 total objectives. सर दो चीजें, even if you are writing something, can write it down. To obtain dash assurance, उसके बारे में अपन बात करते हैं. Reasonable assurance, सर किसके बारे में? About whether the FS as a whole are free from your material misstatements or not, due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. तो भाई साहब, as a auditor आपका पहला सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका यही मकसद रहने वाला है कि सर मुझे रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, और किसके बारे में चाहिए सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में चाहिए, ताकि वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. ओके, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो द पॉइंट इज, लास्ट लेक्चर में आपने ये भी एक्सप्लेन किया था जब ऑडिट रिपोर्ट के बारे में था, दैट whenever the financial statement comes, it is always the responsibility of the management, it is never the auditor. इनफैक्ट आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है जहां पे रिस्पांसिबिलिटी बोलते हो कि किसका रिस्पांसिबिलिटी है, तो मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी. ओके, तो अगर आप कुछ लिख रहे हो, लिखना चाहते हो, तो ये पहला वाला पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव है. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि पहले वाले चैप्टर में even if you see the questions, you will get this question again and again. Okay, so next, to report on the FS and communicate as required by SS in accordance with the auditor's findings. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है ऐसे 200 के हिसाब से. सर सबसे पहले एक तो है आपका रीजनेबल अश्योरेंस, एक तो है आपका रीजनेबल अश्योरेंस. आई टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंस. First chapter very easy. I think it's in fact if you do from the model also now, you will hardly invest 1 hour तक और वो खत्म भी हो जाएगा. But the point is, जब आप लिखने को बैठोगे ना, आपको ये समझ आ रहा है कि लिखने को नहीं आ रहा है. Reason behind that is you're not able to write the wording. So if आप wordings लिखेंगे आपके handwriting से, and then you will word. Okay. The first objective, reasonable assurance, whether the financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Simple. Second, sir, report करना है और communicate भी करना है. जब भी कम्युनिकेशन का बात आता है तो आपको इसको ऐसे ऑलरेडी पता है. कैसे बताएंगे मुझे?
सर 260 किसे कम्युनिकेट करेंगे, दो चार्ज विद गवर्नेंस। इफ यू हैव एनी ऑडिट फाइंडिंग्स और नॉट, अगर कुछ भी आपको मिलता है सबसे पहले आप जाके मैनेजमेंट को बोलेंगे और ये चेक करेंगे कि वो रिजॉल्व हो रहा है क्या नहीं। सो जी एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, एंड ऑडिटर को यही लगता है कि अगर मुझे कुछ मिलता है, इफ आई गेट एनी ऑडिट फाइंडिंग, आई स्ट्रेट अवे गो टू माय ऑडिट रिपोर्ट एंड आई जस्ट राइट इट ओवर देयर, आई विल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, आई विल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ता है। इफ दे आर रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन भाई साहब यू विल टेक अ स्टेप बैक ओवर देयर। अगर नहीं कर पा रहे, देन यू विल राइट इन ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है सेकंड, वो उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले क्या है सर, तो रिपोर्ट ऑन द एफएस एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ऑल द एसएस। सिंपल। चलो next, pay attention please. An analysis of the above brings the following points very clearly. Objective is to obtain reasonable assurance whether FSR as a whole are free from multiple misstatements of what. Next, misstatements in FS can occur due to fraud or error. The auditor seeks to obtain reasonable assurance whether FS as a whole are free. वो audit procedures वैसे डिजाइन करेगा। उसके बाद obtaining reasonable assurance that FS as a whole are free from multiple misstatements enables auditor to express an opinion, because अगर वो free है misstatement, then उसके आगे इसका opinion होगा। ठीक है, the opinion is reported and communicated in accordance with the audit findings through a written report. इसको audit report बोलते हैं। ठीक है, चलो। So therefore perception of both the assistants is not proper. The auditor FS does not seek to provide guarantee. तो वहां पे एक वर्ड यूज किया क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन वापस दिखाता हूँ। क्वेश्चन में इन लोगों ने ये लिखा है कि however they confuse about such an audit tends to achieve, they perceive audit as a dash। ये वाले वर्ड को आपको थोड़ा सा चेक करना है, गारंटी। तो मैंने स्टार्टिंग में वही कहा क्वेश्चन से पहले कि नेवर एवर एन ऑडिटर विल अबाउट गारंटी। ये इनका जो परसेप्शन इन दोनों का वो गलत है, तो आपको वही लिखना है एंड दिस इज योर आंसर। ओके, कैन वी गो अहेड। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इनफैक्ट ये वाले क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कंटेक्स्ट बताऊंगा एंड देन आई विल गो अहेड विद द आंसर। एवरीबॉडी ओके। सर कॉस्टिंग का कब होगा? कॉस्टिंग का हुआ यार, एक्चुअली इट वाज ओनली फॉर द HGPA स्टूडेंट्स, बट आई डू वन थिंग, आई टेल सर तो ऑब्वियसली गो फॉर व्हाट द पब्लिक व्यूइंग, हम वो वीडियोस पब्लिक करते हैं। चलो standards, by the way there will be lot of live videos coming on group 1 and group 2 also, okay, already hua hai, but eventually we will pace up with this month also, because there will be very short revisions coming. So if you want any chapter, if you want any concept, anything, if you want, you just put down in the comments, okay, very simple. Standards on auditing ऐसे apply in the audit of historical financial state information, जो already आपको पता है, ठीक है। Whereas standards on review engagement जो SREs है, apply in review of historical financial information, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में दो ही स्टैंडर्ड्स पूछे गए, एक एक आपका एसए और दूसरा आपका SRE, जिसको रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। पर सर इसके अलावा भी है, तो पहले एक काम करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन आई विल कम ओवर टू दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आपके स्क्रीन के सामने एसएस है, SREs है, SAEs है और SRS। देखिए आपकी ही बुक है, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको थोड़ा बड़ा इसके बारे में डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है सर, ऐसे तो हमको ऑलरेडी पता है सर, ऐसे एंटायर मॉडल हम वही कर रहे हैं। अच्छा एक काम करेंगे, ऐसे का मतलब क्या होता है सर, ये ऑडिट में अप्लाई होता है। सर कौन सा ऑडिट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो भाई साहब जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं तब आप ऑडिट शुरू करते हैं, 31 मार्च के बाद आप ऑडिट शुरू करेंगे, ये आपका नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो थोड़ा फर्क भी याद है, मैंने आपको there was a concept called as limited review, जो मैंने आपको थोड़ा फर्क कहा था। लिमिटेड रिव्यू का यही मतलब है कि भाई साहब ऑडिटर इज नॉट गिविंग 100% ऑडिट ओवर देयर, बिकॉज़ लेट अस से देयर 4 क्वार्टर्स और 4 क्वार्टर्स का LR हो रहा है, तो भाई साहब इसमें आप रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब 100% ये नहीं है, ऑडिट नहीं है। सो इफ आई जस्ट वांट टू रैंक द अश्योरेंस, इफ आई से ऑडिट विल बी एट द टॉप, रीजनेबल अश्योरेंस उसके नीचे, रीजनेबल अश्योरेंस के नीचे क्या रहेगा सर? लिमिटेड रिव्यू रहेगा। इसमें ऑडिट ये वर्ड नहीं होगा, आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, आप सिर्फ चेक कर रहे हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। सो उसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन से? उसके लिए स्टैंडर्ड्स SREs है, बात पढ़ता हूं मैं, व्हिच अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको थोड़ा सा ध्यान है ना, इन दोनों में कॉमन पॉइंट एक ही है सर, भले आप ऑडिट करेंगे भले आप रिव्यू करेंगे, पर कॉमन पॉइंट एक ही है। कॉमन पॉइंट है सर, ये दोनों भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गया, लेट अस से एक क्वार्टर चला गया, क्वार्टर के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में आएंगे तब आप क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। सेम विद ऑडिट, ऑडिट सर पूरा साल भर का जब आपका हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ओनली यू विल स्टार्ट ऑडिट। सो एसएस एंड SREs, ओके, इसमें फर्क क्या है? फर्क एक ही है, इसमें ऑडिट होता है और इसमें रिव्यू होता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया लिमिटेड रिव्यू, ठीक है। चलो सर दो भी और बाकी है, SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये अश्योरेंस जो वर्ड है आप कब इस्तेमाल करते हैं? ताकि कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन, कोई प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, ताकि आप उसको सामने वाले को कुछ तसल्ली दे रहे हो। देखो, which apply in assurance engagement other than audit and review।
तो अगर क्लाइंट बोल रहा है यार मुझे अगले साल इतना इतना प्रॉफिट होने वाला है, इतने इतने यूनिट्स में प्रोडक्शन करने वाला हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ये करेंगे, तो आप ये बोल सकते हम इसका ऑडिट नहीं करने वाले, हम इसका रिव्यू भी नहीं करने वाले। तो इस समय आपका SAE पिक्चर में आएगा, उसके स्टैंडर्ड्स अलग है। एक बार वापस आपको बोल रहा हूँ मैं, अश्योरेंस जब भी आता है, रिमेंबर अश्योरेंस कम्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड नॉट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो पहले दो किए ना अपन ने, SA और SRE, इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने के बाद तुम ये काम शुरू करते हो, और भाई साहब अश्योरेंस के समय अपन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो एज अ ऑडिटर अगर आप ये वाला कुछ काम हाथ में ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका बेस चेक करना पड़ेगा, उसके ग्राउंड्स चेक करने पड़ेंगे, वो जो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के। अगर हम आपको बोल रहे कि अगले साल मेरा 100 करोड़ का ये होने वाला है, आप प्लीज साइन करेंगे इसको, तो आप चेक करेंगे 2-3 बार यार, आप पूरी ब्लाइंडली कुछ करेंगे उसको, तो आपको उसका बेस चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, ओके, नाउ दीस आर कॉल्ड एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जो आपको काम टू काम, वर्क टू वर्क आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल को आपको अकाउंट ये करना है, ऑडिट करना है, अकाउंट्स पेबल का करना है, तो वेर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आप कर रहे हो, ओनली विल वर्क टू वर्क, सिर्फ काम से काम कर रहे हो, नॉट द एंटायर बैलेंस शीट, आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट अगर कुछ काम कर रहे हो उसके ऊपर, तब आप स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चार चीजें हैं भाई साहब। बट जब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन दो इसकी पूछा गया है, एक बार वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन, देन वील गो ओके। Standards on auditing apply in audit of historical financial information, where standards on review engagement apply in review of historical financial information, explain in detail। सर अभी तो अपन ने 5 मिनट में तुमने एक्सप्लेन तो किया सब कुछ, बड़ी लिखना कैसे है अभी, और 5-6 मार्क को आने वाला है, तो प्लीज पे अटेंशन। ऐसे apply in audit of historical financial information, whereas SREs apply in review of historic, okay, as it is published here। Standards on auditing apply in audit of historical financial information, it's reasonable, whereas standards on review engagement apply in review of historical। पैराग्राफ में दो बार वापस रिपीट किया, पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही है, एंड दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। सेकंड, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई, पहले पैराग्राफ में क्लियर कर दिया हमने एग्जामिनर को कि हमको इन दोनों का फर्क पता है क्या है, बट सेकंड पैराग्राफ में आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि भाई हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, which is expressed in financial terms in relation to a particular entity, derived primarily from what, the accounting system of the entity and economic events occurring in the past time period। Third, audit and review are two different terms। Audit is a reasonable assurance, its objective is reduction in assurance engagement risk to a very low level। However, review is a limited assurance। मैंने आपको वही बताया भाई साहब, ये आपका रीजनेबल अश्योरेंस है, ये आपका रीजनेबल अश्योरेंस है, जो एज अ ऑडिटर आपके हिसाब से टॉप रेटेड है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है भाई साहब। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट, आपको पहले ही मैंने बताया। और इसके नीचे क्या आएगा आपका, इसके नीचे क्या आएगा सर, इसके नीचे आपका आएगा लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू आएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये इस पैराग्राफ में आपने लिख दिया। और लास्ट में, standards on auditing have been issued on wide spectrum of issues in the field of auditing, including but not limited to oral objectives और डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी आपके ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। और लास्ट में आप कुछ एग्जांपल उसको दे सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है, जो भी आपको याद आ रहा है ऐसे, आप यहाँ पे उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। और SRE का भी आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही बताया था कि SRE एंगेजमेंट रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इंटरिम क्वार्टर ओके, अब ये भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल एवरीबॉडी। सेकंड क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस आपको बोल रहा हूँ, SA और SRE इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ सकते हैं, और भले आपको उसका आंसर पता भी रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको पता रहेगा नहीं, बट द ओनली थिंग इज व्हाट यू नीड टू राइट एवरीथिंग। पर वापस मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे किया है। यहाँ पे SA और SRE के बारे में बताया, सेकंड पैराग्राफ में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन किया कि जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आते हैं। थर्ड में क्या एक्सप्लेन किया है सर, इट इज बेसिकली व्हाट ऑडिट का मकसद क्या होता है और आपका लिमिटेड रिव्यू का मकसद क्या होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में आप एग्जांपल्स लिख के वो छोड़ सकते हो, तब जाके आपको 5-6 मार्क्स मिलने वाले हैं। यू कैन नॉट जस्ट राइट 1-2 लाइंस ओवर देयर एंड जस्ट टेल द एग्जामिनर कि हां आई नो व्हाट इज डिफरेंट, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, इवन आपको पता रहेगा तो आपको वो आंसर बराबर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैन वी गो अहेड प्लीज एवरीवन। Kriti, a CA student, has joined articles as deputy audit. She considers audit engagement to be an assurance engagement. Her understanding is that the audit engagement is the only kind of assurance engagement in which a practitioner gives a written assurance report in appropriate form. Okay. However, her friend Soumya does not agree with her. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. Besides, Soumya also thinks that assurance engagement can also relate to matters other than historical financial information. Who appears to be correct state with reason. So, देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर है तो वेरी गुड, आई हैव टेकन डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो, दिस ऑल केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके,
So like in the first part also they will ask your opinion. तो पहले वाले पार्ट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जहाँ पे आपके ओपिनियन पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो जब कहानी खत्म होता है ना क्वेश्चन का, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार वो पूछा क्या उन लोगों ने वहां पे, सी इसमें क्या पूछा है वो सब। व्हेन द स्टोरी गेट्स ओवर, सी व्हाट दे आस्क्ड यू, शी इज ऑफ द व्यू दैट assurance engagement are not restricted to audit alone. Besides, she also thinks that assurance engagement can also relate to matters other than historical financial information whose view appear to be correct. तो आपसे एक लाइन में लिख के छोड़ नहीं सकते किसका व्यू बराबर है, आपको लिखना पड़ेगा रीजंस क्या है उसके। अच्छा बाय द वे ये किसके बारे में है सर, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में है, ठीक है। सो सी ऑडिट एंगेजमेंट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, हाउएवर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटिंग अलोन। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा था एसए है, एसआरईज है, एसआरएस है, देयर आर अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक टू जो आपने ऊपर जस्ट चेक किया, ठीक है। The difference is of degree, whereas an audit provides reasonable assurance, which is high level assurance. इसको भी आपको चार लिख सकते हैं, you can write essays, SREs, SEAs आप लिख सकते हैं वहाँ पे। There are also assurance engagement which relate to matters other than historical financial information, like what sir prospective financial information के बारे में assurance है, आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। Next, in the given case, it is of the view that audit engagement is the only kind of assurance in which practitioner gives a written from, whereas the view that this is not restricted, the view of Soumya is correct. तो Soumya की दूसरी उसका view correct था and किसी का wrong था, उसको लगा कि वो एक ही सिर्फ है, there is only one audit engagement, ऐसा नहीं होता है। अपन जस्ट चेक किया था, there are lot of assurances, lots of standards depending upon the nature of what you have got. Okay, so pay attention please. Next, question number 4. Okay, everybody pay attention and तुम्हाला ये लिहायचा है, if you think something is outside the box please write it down. Okay, we are still on chapter number 1 only. I've compiled a lot of questions, आपको थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। चलो, RST Limited, a retail company, has set up an internal control requiring all the invoices to be stamped and signed by an authorized person in goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving goods and premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. तो बेसिकली उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो वो आपको यही बता रहा है कि हम हमने सब ये पूरा सेट किया है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है। During the auditor finds out that two employees, a purchasing manager and an accounts clerk, have worked together to bypass this control, submitting fake invoices that resulted in payments for goods that were never received. Okay, तो उसको एक फ्रॉड, उसको एक लीकेज मिल गया उसके सिस्टम में। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एज पर 200, जो मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो इवन इफ यू हैव रिटन प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 200। ऑल्सो सर क्वेश्चन यहाँ इतना ही है क्या, इतना पूरा कहानी बताया उन लोगों ने, इंटरनल कंट्रोल है ये है, और लास्ट में क्या पूछा उन लोगों ने कि व्हाट द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 200, इज दैट द ओनली थिंग? नो। सो also explain why the auditor can provide only reasonable rather than absolute assurance that the FS are free from material misstatement due to fraud or error. तो दो क्वेश्चन पूछे गए, पर वापस second question also you know. First question is the two objectives of say 200, which is very simple, which just we have done it. And the second thing is वो आपको ये पूछ रहे हैं कि भैया सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस क्यों, व्हाई नॉट एब्सोल्यूट? आई थिंक उसका भी आंसर पता है, एक बार देखेंगे कि कैसे लिखा है आईसीआई ने, एंड देन विल गो। ओके, ये दो आपको आई थिंक आप आई थिंक यू माइट बी नोइंग नाउ। To obtain reasonable assurance about whether FS are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Second के to report on the financial statements and communicate जो भी आपको मिलता है। ये दो पहला लिंक था because it is very very important. Okay, क्या आपने हो गया? तो second question अभी वो सुनो, second उसका सब क्वेश्चन का आंसर। The process of audit suffers from certain inbuilt limitations. अगर आपको याद रहेगा आपके मॉड्यूल में पहले वाले चैप्टर में एक भारी वाला क्वेश्चन है कि what are the inherent limitations of an audit. स्कोप और एक भी क्वेश्चन है कि ऑडिट के स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता है, वो भी क्वेश्चन लिया है मैंने, इसका आंसर शुरू वहां से हो रहा है। देखो, ऑडिट सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इनबिल्ट लिमिटेशंस ड्यू टू व्हिच एन ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर व्हाट आर दीस इनबिल्ट लिमिटेशंस? अगर आपको इसका आंसर चाहिए 2 मिनट रुको, मैंने उसका क्वेश्चन लेकर रखा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट। भाई साहब मुझे एक बताओ यार, आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो ये उन लोगों ने जजमेंट्स बनाए, अकाउंटिंग उन लोगों ने की है, और आपसे उसका क्या करना, आपसे उसका चेकिंग करना। The point is what? There are manual judgments, there are manual entries over there, so there might be a lot of chances of errors and frauds, and that's the only reason where you are backing out from giving what a total guarantee. That is called as absolute assurance. Okay. So again, one of the premises for conducting an audit is that management acknowledges the responsibility of preparation of FS. ये तो आपको already पता है. One second. Next, therefore, the auditor may not be able to obtain what? A complete assurance. One of the premises for conducting audit is that the management acknowledges responsibility for preparation of FS.
In the context of RST Limited, the management design and control requiring लिखा है उन लोगों ने. Given these factors, auditor cannot provide absolute assurance that the FS are entirely free from material. इनफैक्ट वो क्वेश्चन में खुद लिखा है उन लोगों ने कि उनके दोनों एम्प्लॉइज ने क्या किया, उसके इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड किया. और ये हो सकता है तो भाई कौन से एंगल से एक ऑडिटर आपको दे देगा पूरा का पूरा अश्योरेंस? इट इज इम्पॉसिबल. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन योर बुक. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक काम करेंगे, पहले वो ये वाला क्वेश्चन लेंगे अपने लिमिटेशन वाला, और फिर मैं आगे जाता हूँ. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूँ पहले, एंड देन आई विल गो ऑन टू द प्रीवियस क्वेश्चन. एवरीबॉडी पे अटेंशन. ये आप लिख भी सकते हैं अगर आपको आता है, वेरी गुड. अगर नहीं आता है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. इवन इफ यू राइट द पॉइंटर्स फॉर नाउ, अगर आप सिर्फ पॉइंटर्स लिखेंगे तो भी इट इज इनफ. व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट? सर अच्छा, बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट लिमिटेशन? सर एक ऐसे लिमिटेशन जो आप कभी निकाल नहीं सकते, वो वैसे ही वहां पे रहने वाले. सबसे पहले नेचर ऑफ एफआर. वही बात कर रहा था मैं अभी कि जो जजमेंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो आपने थोड़ी बनाए या वो तो मैनेजमेंट ने बनाए. तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है. तो आपको वहां पे भरोसा ही नहीं हो रहा है तो किसने बनाया, क्या जजमेंट लिया है, तुमने तुम्हारा पूरा ताकत लगाया, बट लास्ट में देयर विल बी इनहेरेंट लिमिटेशंस. बिकॉज़ रिमेंबर वन थिंग, इफ देयर इज अ फ्रॉड, अगर फ्रॉड है, फ्रॉड आपको ऐसा सिल्वर प्लेट में सजा के नहीं देंगे. हाँ बाबा ये फ्रॉड है, ये वाले में फ्रॉड है, ऐसा थोड़ी देंगे आपको यार. तो देयर विल ऑलवेज बी व्हाट, अ इनहेरेंट लिमिटेशन. सी प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं. राइट द पॉइंटर्स. द मेन पॉइंट इज भैया उसमें मसाला क्या लिखना है. तो मसाले के लिए सबसे पहले कोई दो तीन वर्ड तो उसमें आपको जानना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल इन दिस इट इज द जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट, और these judgments may involve what subject decisions. Everything is going to be different. Therefore, auditor may not be able to obtain what absolute assurance over. Okay. Second, क्या आपका limitation? Nature of audit procedure. See in an audit procedure also it is manual, right? थोड़ी AI वहां पे है. Second point ये है कि भाई साहब सर हम सैम्पलिंग करते हैं. We do sampling, right? हम लोग पूरा तो चेक नहीं कर सकते. तो ऐसा हो सकता है कि यार there might be some errors over there, because we don't have that much amount of time कि where we'll do every voucher over there. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence to performance of audit procedure. However, there are practical and legal limitations to ability of auditor to obtain audit evidence. See? So for example, an auditor does not test all transaction balance. He only forms his opinion from what? Samples. समझ में आ रहा है? सैंपल्स के ऊपर ही अपना ओपिनियन होता है. सैंपल्स के ऊपर आपका एविडेंस भी कलेक्ट होगा. The management may consist of dishonest and unscrupulous people and may by itself involved in fraud. It may be engaged in concealing fraud by design. कोई लिखा है कि यार जो फ्रॉड रहेगा ना वो एकदम कंसील करके देंगे आपको. तो आपका भरोसा उस पर नहीं है. देयर इज सेकंड, देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन. थर्ड क्या इनहेरेंट लिमिटेशन? नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. शायद से ऑडिट में पहले फर्स्ट डे ओनली वी हैव डिस्कस कि ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का आपका इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए. ठीक है, I think I've told you on the very first day, and that is the big thing. So you do not go like I have to do investigation. आप CID बन के नहीं जाते उसके अंदर. ठीक है, so that's your third inherent limitation. Timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time. Okay, तो ये भी है कि there has to be a proper balance with the information. तो सिर्फ ताकि जब भी आपको information मिले, and क्योंकि आप audit report तो बाद में पेश करते हो, देखो the relevance of information decreases over time, and the auditor cannot verify each and every matter. Impossible it was. Therefore, a balance has to be struck between what? जितना भरोसा आपका information के ऊपर and the cost of obtaining it. Okay, so this is your fourth limitation, inherent limitation. एक बार आप कोशिश करेंगे लिखने के लिए. We write down all the limitations, inherent limitations of an audit. Number one, nature of financial reporting. Second, nature of audit procedures. Third, not in nature of investigation, and timeliness of FR and decrease in the relevance information over time. Okay. जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी जब आपको स्टार्टिंग में मिली थी और जब आप ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है. लेट अस से आपने ऑडिट शुरू किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल और आप यू आर गिविंग ऑडिट रिपोर्ट लेट अस से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, बट बाय दैट टाइम जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला था इट माइट हैव चेंज्ड आल्सो बाय नाउ. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ व्हाट ऑडिट. लेट मी नो वेदर यू हैव डन इट और नॉट. क्या आपने लिखा है, वेदर यू हैव रिटन इट और नॉट. ओके एवरीवन, 1, 2, 3, 4. अच्छा, we missed on this one. Future events or conditions may affect on entity adversely. Adverse events may seriously affect ability of an entity to continue. The business may cease to exist in future due to change in market condition, emerge a new model, or products are due to onset of some adverse event. वो भी है कि भाई साहब there might be some events which are not in your hands. Future events भी है तो वो आपके इसमें नहीं. For example, आपने शायद से पहले वाले पार्ट में वो गोइंग कंसर्न किया था वो ऐसे 570. So going concern is that thing. If the management tells you well, but if they do not tell you, then what you will do? आपको निकालना पड़ेगा. देयर माइट बी इनहेरेंट आल्सो ओवर देयर कि आपको वो नहीं बता रहे. सो देयर माइट बी सम इवेंट्स फ्यूचर
which might affect the entity very adversely. Okay, ये 5 pointers है आपके inherent limitation के, ठीक है. Now we will go on to the previous questions which were over here. Okay, now this we won't do because इसमें वापस वही पूछा है उन लोगों ने, ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आपको ऑलरेडी आता है there are 2 objectives of asset 1. Okay, चलो there was this one more question जो बहुत पुराने आरटीपी में था. There are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. Explain with examples. अगर ये आपको आता है तो आप कैसे लिखेंगे एक बार वापस. Sir, there are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. अच्छा, जब आप ऑडिट एविडेंस कुछ गैदर कर रहे हैं तो क्या वहां पे कुछ ऐसा होता है, लिमिटेशन यस होता है. सबसे पहले सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अननेसेसरी. आप कब से मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन, यू आर आस्किंग द इंफॉर्मेशन बट स्टिल द मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन. देयर माइट बी वन थिंग. So this is one big limitation. Second, fraud may involve sophisticated and careful design schemes. The fraud, forget the grassroots level, top directors ने fraud किया. So this is also one of the biggest limitation over there. Next, audit is not an official investigation. जो आपने अभी just सीखा है. Okay, this 3 points you can write down if they are asking their practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence. ये आपका हो गया point. Next. This question I think we have done. ये वाला question हो गया है. हाँ ठीक है, ये वाला बाकी है. What are the elements of assurance engagement? आपके मॉडल का क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा. It's a direct question. So by the way, whenever assurance comes, आपको एक चीज दिमाग में डालना पड़ेगा. So it is all about prospective information. Okay, it is not about historical information. तो इसमें सर कैसे होता है, 3 party होता है. The one who's a practitioner, the responsible party मतलब जो बना के देगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट में आपको जिसको पेश करना है. रिमेंबर, a practitioner is very bigger than an auditor. It might be some other person also. This is the first element. Second, an appropriate subject matter. Subject matter का मतलब ये होता है कि किसके ऊपर अश्योरेंस देना है. उसके बाद सुटेबल क्राइटेरिया, अपने को बेंचमार्क्स लगाने पड़ेगा. बिकॉज अगर वो बता रहा है 100 करोड़ का टर्नओवर होने वाला अगले साल, बॉस देयर हैज टू बी बेंचमार्क. हाउ विल आई ऑडिट, मैं कैसे करूँ ये सब कुछ. तो उसके लिए मुझे एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि मैं उसका कॉम्पिटिटर को चेक कर सकता कि सच में ऐसा मार्केट में है क्या. अभी sufficient appropriate evidence. Now sir, हम हमेशा SAE लिखते हैं, that is sufficient appropriate audit evidence, but इसमें assurance के समय अपन audit करते नहीं है. We only gather what sufficient appropriate evidence. जो भी उसने एक बोला है ना कि I want to achieve this target and that target, तो उसके लिए मुझे evidence में ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, but you will never mention audit over there, तो इसमें हम audit नहीं करते. ठीक है. Next, a written assurance report in the appropriate form. So obviously आपको अगर कुछ भी evidence चाहिए, anything you want, you will tell the management only कि भाई जो भी वो लिख के दे मुझे. That is essay what 580. A written report is provided in containing conclusion that conveys assurance about the subject matter. A written assurance report is the outcome of an assurance engagement. Okay, ये direct question है. एक बार अगर आप लिख रहे हो तो please write down the elements of assurance engagement. Everybody needs to write down. Everybody. एक बार वापस see. Case based questions are there. पहले पैराग्राफ में पूरा कहानी रहेगा. The question will start from somewhere in between. Okay, but even that might be a direct question, but these are very direct questions. What are inherent limitations, what are your elements, ये आपको लिखना ही पड़ेगा. Okay, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए and write it with me only. Okay, don't just highlight in your book, that is very dumb. Please do not highlight, please लिखेंगे. Okay, write down everything. Audit में वही होता है. I have seen lot of students, they only read, उसे पढ़ते हैं. In fact, they will read for the entire day. पूरा audit दिन भर पढ़ेंगे. और जब लिखने का बारी आएगा ना, बोलेंगे यार यार लिखने को नहीं हो रहा है. इसलिए नहीं हो रहा है because you have not written only in your life. So the thing is very simple. Just write it for few minutes and wait. Okay, then I'll go to the next question. आपको elements लिखना है assurance engagement. आपको elements लिखने हैं assurance engagement के. Sir, सबसे पहले 3 party relationship, the practitioner, the person who is responsible to give you the statements, and the third, आप किसको देना चाहते हो, किसको submit करना चाहते हो. You want to submit to the bank or any party outside, तो वो 3 रहेगा. ठीक है. Next, appropriate subject matter, मतलब किसके ऊपर चालू assurance है. तो मैं जैसे आपको बता भी prospective information, that might be a subject matter. Next, suitable criteria, इसमें benchmarks important है. तो एक as a auditor, as a practitioner basically, we will not obviously go for जो उसने कहा वो बराबर है. No, so we'll check everywhere, we'll check the competitor, we'll check the industry also. उसके बाद sufficient, appropriate, don't write audit over there. In fact, don't use only audit in the entire answer. You will not write auditor, you will not write audit. आप प्रैक्टिशनरी वर्ड यूज करेंगे और आप ऑडिट भी यूज नहीं करेंगे. आप SAAE लिखेंगे, SAAE नहीं लिखेंगे. समझ में आ रहा है आपको. और लास्ट में है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, जहां पे भी आपको चाहिए आपके मैनेजमेंट से. जस्ट टेल मी वन थिंग, वेदर यू हैव रिटन यस और नो.
have you written down elements in your book, then only I will go ahead. It's very simple. अगर लिखा रहेगा तो ही आगे जाएंगे, वरना नहीं. चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट. ओके, just let me know whether you have written the elements and then I will go ahead. Okay, very simple and this is very important. Okay, I've taken like few questions of audit evidence important time. In the meantime, what I'll do is SA 500 and SA 501. Okay, now I'm waiting for your answer. Just let me know whether you have done and then we'll go ahead. Chalo, then we'll go ahead. SA 500 SA 501. Sir, 500 is the original your audit evidence. ये आपका ओरिजिनल ऑडिट एविडेंस, ठीक है. बट सर 501 भी है ना सर, और 501 से किसके बारे में बात करते हैं? मैं आपको क्लास में बताया था, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला था ILS करके. ILS. So what was ILS? This is basically your inventory. This is basically inventory. फिर आपका litigation, litigation, और यहाँ पे क्या था भाई साहब? सेगमेंट. यहाँ पे क्या था? सेगमेंट रिपोर्टिंग. ठीक है, ये तीन चीजें 501 वाला डील करता है. Now the thing is what, even if you do audit evidence from the module, there are a lot of essays यार. अरे 500 का पूरा सीरीज है, 500 का पूरा सीरीज है भाई, सीरीज है पूरा 500 का. सर 500 हो गया, 501 एक हो गया. अभी चलो डिस्कस ही करते हैं. अभी विषय निकाला जाए, सर अपन उसको खींचेंगे जरा. अगर आपको आंसर देना है मुझे आंसर देंगे प्लीज. ये हो गया आपका ऑडिट एविडेंस. 501 हो गया ऑडिट एविडेंस स्पेशल मैटर का जो आएंगे. ठीक है, 505 बताएंगे क्या है? तो 505 इज योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ठीक है, अच्छा इसके बाद मुझे बताएंगे सर 520 दैट इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, समथिंग आउटसाइड द बॉक्स. आप रेशियोज यूज कर रहे हो, आप ग्राफ्स यूज कर रहे हो. नेक्स्ट 530, 540, 550. आपसे मुझे आंसर एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लिख रहा हूँ तो आपको सिर्फ देखना है. ठीक है, 500 पूरा पूरा 500 का खत्म कर देंगे, सिर्फ मुझे सिर्फ बताएंगे क्या है. 560, 570, 580, उसके बाद 600 के तीन है, वो तो बहुत ही इजी है. 600, 610 and 620. Okay, we'll do that afterwards, not that big this. But can you please tell me what is 530, 540, 550, 560, 570 and 580? Everybody fast. Sir, 530 is your 530 is your audit sampling. Audit sampling. So 540 is your auditing accounting estimate. Auditing accounting estimate. Okay. 550 is your related party. 550 is your related party. पूरा 500 का सीरीज लेके बैठो, it's no important है. 560 is your subsequent event. Subsequent event. 570 सबसे favorite and सबसे important भाई साहब, and that is your going concern. That is your going concern. And 580 जो अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले, that is your return representation. Return representation. Okay, return representation. Okay, इतने सारे एसेस है. The point is what, whenever audit evidence is there, evidence can be collected internally, externally. That is there. So there are lots of questions on evidence यार. मतलब जो external evidence है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, because it comes from an independent party. There might be some limitations, there might be some barriers from you from asking the audit evidence. मैनेजमेंट बोलेगा यार नहीं वहां से बात नहीं करने का, I don't allow you all that stuff. बहुत है audit evidence में, ठीक है. But the point is what, भाई साहब पॉइंट ये है कि सर हम ये सब पढ़ते हैं, हम भले मॉड्यूल से पढ़ेंगे, हम नोट से पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड. But the point is सर क्वेश्चंस का फंडा है. तो today is what, 16th of December. You still have time. I'm still telling you, and don't neglect audit. मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, ऑडिट नेग्लेक्ट मत करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, क्वेश्चन आंसर्स करो. बस एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर्स करो. बस क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हारा अपना चैप्टर रिवाइज आएगा हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग चैप्टर एंड देन क्वेश्चन. बिकॉज़ बाय द टाइम टू यू कम टू क्वेश्चन आंसर्स यू फील यार बहुत हो गया, अपन आज नहीं करते. तो भाई साहब उल्टा करो ना, बस क्वेश्चन आंसर करो. नाउ दीज आर द डेज वेयर यू हैव टू थिंक अ बिट एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम पॉइंट ऑफ. समझ में आ रहा है? तो एबीसीडी चैप्टर करने से अच्छा है वो क्वेश्चन करेंगे आप, तो क्लास में आपका ऑलरेडी चैप्टर हो गया रहेगा. क्वेश्चन आंसर मोर इंपॉर्टेंट. चलो नाउ विद दैट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 500 का एसएस पूरा, कैन वी गो ऑन टू द क्वेश्चन. वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर, एंड इफ यू थिंक समथिंग इज डिफरेंट और कुछ अलग है तो आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, अगर वो पता है वेरी गुड. सीए कनिका ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. ओके, the auditor used an audit procedure according to which all the documents and records maintained by the company were checked in detail to obtain audit evidence. ठीक है, तो क्या लिखा है इन लोगों ने कि सर सीए कनिका ने ऑडिट किया था
द ऑडिटर यूज करने का यूज ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स, सब उसने प्लानिंग बराबर किया था, और जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन थे वो सब उसने क्या डॉक्यूमेंट में किया था एज पर। एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर, यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर, comment on reliability of audit evidence obtained by performing such an audit procedure in some situations. Now, एक सिंपल पूछोगे आपको, so अगर आप ये क्वेश्चन लाइक इफ यू क्रॉस दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, अब 2-3 बार ये पढ़ोगे क्या लिखना है इसमें यार, वो कनिका है उसने ऑडिट किया है, वो पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया है उसने, अभी लिखो क्या है इसमें, देखो भाई साहब ना क्वेश्चन कैसे कैसे कंफ्यूज किया आपको यहाँ पे। एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर, so you have to make up something like what to write over here now. In second, you have to comment also on the reliability of audit evidence obtained by performing such an audit procedure. So please start writing down these things. आपको वापस वो you have time, like target 5 to 6 questions a day. अभी से भी हो जाएगा. You have your exam the next month. You still have time. Do not neglect audit. In fact, audit से ही आपका वो group निकल जाएगा पूरा बाहर. Okay? चलो, और easy है भाई साहब. चलो, come on. So inspection involves examining records and documents whether internal or external. मैंने शायद से क्लास में आपको बताया था कि दो चीजें होती है, एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है ऑब्जर्वेशन। ओके, तो फर्क क्या है दोनों में? आई थिंक मैंने पार्ट 1 में भी आपको कहा थे। तो इंस्पेक्शन का मतलब यही होता है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मैं वहां पे जाके सब डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ, मैं वहां पे जाके सब स्टॉक चेक कर रहा हूँ, मैं स्टॉक गिन रहा हूँ एक्चुअल में, ये इंस्पेक्शन हो गया। ऑब्जर्वेशन, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ, भाई तू चेक कर, मैं तुझे ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता कि तू कैसे चेक कर, समझ में आ रहा है आपको? सो कमिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है देखो ना, और कनिका ने क्या किया है, the auditor used an audit procedure according to which all the documents and records maintained by the company were checked in detail. तो चेक करेंगे अभी, चलो आंसर। Inspection involves examining records and documents whether internal or external in paper form or in a digital platform. In view of the above, it can be concluded that CA Kanika used inspection as an audit procedure. तो ladies and gentlemen, अगर आप प्रश्न चिन्ह में हो कि सर ये आंसर शुरू कहां से करें, तो ये आंसर भाई साहब इसका आंसर है, किसका आंसर है? इंस्पेक्शन। तो ऐसे आपके क्वेश्चन है कि जहां पे आपको थोड़ा सा एक लिखना पड़ेगा, बिकॉज सी क्वेश्चन में अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया रहेगा फॉर दैट मैटर, अनफॉर्चुनेटली वो मिस आउट हो गया और एग्जाम में अगर आता है तो आपको समझेगा नहीं वो शुरू कैसे करने का। तो प्लीज डू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो ये इंस्पेक्शन वाला क्वेश्चन है सबसे पहले, क्योंकि उसने वो डिटेल में चेक किया था, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू। Inspection of records and documents provide audit evidence of varying degrees of reliability depending on the nature and source, and in the case of internal records and documents for the effectiveness of control. So ये बात कि इंस्पेक्शन से आपको ऑडिट एविडेंस तो मिल जाएगा, एक बार वापस इंस्पेक्शन से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव कलेक्टेड। मैंने जस्ट बोलते हुए ये भी आपको कहा था कि सर जो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस है, जो एक्सटर्नल पार्टीज है, आपको वहां से ऑडिट एविडेंस ज्यादा मिलेगा सर as compared to internal। ये तो वो भी एक है। Example of inspection uses test of control is inspection of records of evidence of authorization। तो डिटेल में निकाला उन लोगों ने वहां। Some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset। For example, a document constituting a financial instrument such as an inventory or bond। ये examples है, इसमें से एक भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा लिखना है आपको, ठीक है? These are all examples, you can just write one out of them। Okay? If you want to check a fixed asset, आप बिल चेक करते हैं, आप इनवॉइस चेक कर सकते हैं, आपको वहां से भी ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, बिकॉज आप खुद वो जाके क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो, ओके। सो moral of the story, if this kind of question comes and if they mention this check in detail, make sure कि आपके दिमाग में इंस्पेक्शन वर्ड स्ट्राइक हो रहा है, बिकॉज एग्जामिनर वो पूरे आंसर में वही चेक करेगा कि तुमने इंस्पेक्शन कहाँ पे। ओके, I hope you have got that a bit. I hope you have got that a bit. So, can we go on to the next question, please, everyone? CHGA is conducting stat audit of Gemini Limited, engaged in manufacturing of pharma products. Okay, the company is fairly large, one, and has a well-functioning internal audit department. Okay, while considering sending out external confirmation request, I hope you know the essay which we've just written to trade receivables. Details का बात कर रहे हैं ये लोग. CAG has delegated the process of choosing paid receivables, designing requests and receiving responses from customers to internal audit department। इस भाई साहब ने क्या किया, स्टैट ऑडिटर ने, कि जो भी रिस्पॉन्स उसको बाहर से लेके आएंगे ना थर्ड पार्टी से, ये पूरा काम डेलीगेट किसको कर दिया, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का। The responses are also received on the mail ID of the internal audit department। Is the approach of CAG right? Can you please tell me regarding this? आंसर बाद में चेक करेंगे आपके हिसाब से क्या। और आपके लिए मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ, सबके आंसर चाहिए कमेंट में, जो भी आपको सही लगे। जस्ट राइट अ वेरी शॉर्ट यस नो सर, ही इज राइट एंड ही इज रॉन्ग। ओके, आई टेल द क्वेश्चन। ये भैया सीएजे है, ये ऑडिटर है जेमिनाई का, एंड दिस गाय इज डूइंग अ वेरी गुड ऑडिटिंग। तो उसमें वो यही होता है कि उसमें जब एक ऑडिट प्रोसीजर आता है उसको अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं, जिसका ऐसे 505 है।
तो जब ये काम करवाना शुरू होता है तो ये पूरा काम वो डेलीगेट कर रहा है किसको, इंटरनल ऑडिट वाले को। अभी इंटरनल ऑडिट के मेल आईडीज पे उनके आ रहे हैं रिस्पॉन्सेस। अभी मतलब जब अपन पूछते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 में, तो अपन यही पूछते हैं ना कि बाबा बैलेंस बराबर है क्या, ये बैलेंस मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है क्या, ये जितने भी रिस्पॉन्सेस है, जितने भी एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सब उसके मेल आईडी पे जा रहे हैं। किसकी मेल आईडी पे? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की मेल आईडी। तो आपको यही पूछा गया है कि ये जो सीएजे है, क्या ये इसका अप्रोच बराबर है या गलत है, आपके हिसाब से क्या? What do you think from your perspective? Give a very blank point answer. Yes तो yes, no तो no। तो आपको लगता है कि नहीं सर सीएजी ने बराबर किया है, बिकॉज सर इंटरनल ऑडिट में तो सीए तो बैठा है ना, क्या बड़ी बात है, मैं करूंगा या वो करूंगा, वेरी सिंपल थिंग। इफ यू थिंक दिस वे, दैट्स योर आंसर। इफ यू थिंक नो सर, बोथ आर डिफरेंट सर, वो उसका काम है। इनफैक्ट तुम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम्हारा जो एविडेंस तुम उसको दे रहे हो, ठीक है। तो आपको इसमें के बारे में क्या लगता है, हु इज राइट, सीएजे इज राइट और सीएजे इज रॉन्ग? एनीबडी यू कैन टेल मी फर्स्ट, एनीबडी? नम्रता is telling no sir, he is not right. I hope that's your answer. सर सबसे पहले एक काम करेंगे, सी हाउ दे दिस। When using external confirmation procedures, the auditor shall maintain control over external confirmation। लिखने का तरीका देखो भाई, वो वही इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स महत्वाच्या है। सगळ्यात पहिला, अगर तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान देगा, ये इंपॉर्टेंट है पहले लाइन में। सर क्या लिखा है? तो जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हैं, जब हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, सर सबसे पहले आपको कंट्रोल होना चाहिए। पठान, अब ध्यान देंगे प्लीज, आपको कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर? सर वो कंफर्मेशन के ऊपर। अगर आपका ही कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, आप वो कंट्रोल ही डेलीगेट कर रहे हो दूसरे को, तो क्या फायदा उसमें? तो सबसे पहले शुरू वहां से किया उन लोगों ने, इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म द रिक्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुमको पहले तय करना पड़ेगा भाई साहब। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टनर, किसको भी नहीं पूछने का बात, जिसको पूछने का उसको मेल जाना चाहिए। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली एड्रेस, उसके एड्रेस पर जाना चाहिए, उसके प्रॉपर मेल आईडी पे जाना चाहिए, और जो वापस इंफॉर्मेशन आएगा ना, वो सीधा ऑडिट करके मेल आईडी पे ही आना चाहिए। सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू कंफर्म। व्हाट इज फॉलो अप रिक्वेस्ट? भाई नहीं बार नहीं आंसर दिया तो आप वापस नहीं कर सकते। ये चार चीजें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अंबेडकर, आप ध्यान देंगे प्लीज 2 मिनट। सबसे पहले सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एस ए 505 क्या कहता है? 505 सबसे पहले एक बार ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे आपका कंफर्मिंग पार्टी, जब डिजाइन करेंगे रिक्वेस्ट, डिजाइन ऐसे करेंगे कि वो एड्रेस प्रॉपर्ली हो रहा है और आंसर भी वापस उसके पास ही जा रहा है, और लास्ट में सर फॉलो अप रिक्वेस्ट। ये आपका फ्रेमवर्क हो गया 505 का, ताकि आपने एग्जामिनर को बताया कि भाई साहब मुझे ये पता है सब। ओके, अभी तक जो क्वेश्चन है उसका कुछ भी जिक्र यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है, वो अभी होगा। नेक्स्ट, in the given case, it appears that external auditor has delegated an entire work of sending of external confirmation request to internal, for which he has no control at all. नम्रता आपका आंसर बराबर था, पठान आपका आंसर बराबर था, हम भी आपको ध्यान देना पड़ेगा प्लीज थोड़ा सा। अभी क्या लिखा है? अरे सर ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि उसका कंट्रोल उसको डेलीगेट किया है। अगर तुमने पूरा उसका कंट्रोल इसको दे दिया है तो भाई साहब वो तो आपको आंसर देगा नहीं बराबर। बिकॉज प्रॉब्लम ये है, अगर लेटर से कंफर्मेशन कुछ गलत आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आपको क्यों बताएगा यार? सो further responses to external confirmation are received on mail ID of internal. All these acts are not in line with SA 505. Very very important. अरे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ओके, 2-3 चीजें आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर को जो आईसीए है उसको चाहिए क्या, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, एंड यू हैव टू गिव देम दैट ओनली। ओके, वेरी सिंपल। I hope everybody has got this. Okay, has everybody got this question? Very good question. Can you go on to the next question, please? The newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence. इसका मैं आपको पहले से बता दिया। Everybody knows this also. What is sufficient quantity wise? What is appropriate quality wise? Okay, just because you have got enough of audit evidence does not mean it's a good audit evidence. It has to be quality also. Okay, चलो मैं वापस क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statement. What audit procedure should he perform for this purpose? अच्छा, मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में which essay is being attracted? Which essay is being attracted? Anybody can tell me which essay is being attracted? इस पूरे इसमें कौन सा essay इसमें attract हो रहा है? Anybody? Which essay is being attracted? Anyone who can tell me first? कौन सा essay attract हो रहा है मुझे बताएंगे इसमें? First.
और ये जो ऐसे है ना, ये आपने शायद ऊपर तो लिखा नहीं है, लगता है यहाँ पे 510, 510, क्या 510 भाई साहब? ओपनिंग बैलेंस वाला ऐसे था। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर राइट है आपका, आंसर राइट है। एवरीबॉडी पे अटेंशन है। Couple of questions there, couple of questions. थोड़ा फन है, I know it's bit of theory and all that. You might get bored also in some point of time. क्या बोर हो भी कह रहेंगे? The point is you need to have कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है? चलो, pay attention please. चलो, सर, ओपनिंग मैथ का क्वेश्चन है। It is essay 510. Okay, pay attention. So, the newly appointed auditor shall read the most recent FS, जो उसका recent रहेगा, and the predecessor auditor's report for information relevant to opening balances. तो आपको उस पर वही चेक करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ब्लाइंडली उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ उस पर है, मैं ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, तो पिछला बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि बराबर। So I can see two things. I can see the previous report also. I can see the predecessor auditor's report also. Okay, or I can see the financial statements also, the previous one. The auditor shall obtain SAAE about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period's FS by what? कैसे करेंगे आप ये? सबसे पहले determining whether prior period's closing balances have been correctly brought forward. ये आपका सबसे पहला मकसद। 510 का वही मकसद है पहला कि जो पहले बैलेंसेस है पहले साल वो इस बार कैरी फॉरवर्ड हुए क्या बराबर, वो चेक करना पड़ेगा। आर दे ब्रॉट फॉरवर्ड? सेकंड, डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट फॉलो की है क्या, इस बार कोई चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वंस। सबसे पहले whether prior year financial statements were audited for using the copies of the audited FS including other relevant documents related to prior period FS। ये चेक करना कि पहले वाले डॉक्यूमेंट्स जहां पे आप बैलेंस चेक करें वो ऑडिट किया कि ऑडिट नहीं किया। सेकंड, evaluating whether audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balances। क्या आपके पास एविडेंस है कि जो बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं वो सब बराबर हैं। एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट, ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मुझे वापस चेक करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आल्सो, ताकि आपको तसल्ली हो, आप सेटिस्फाइड हो कि वो ओपनिंग बैलेंसेस बराबर, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर 510 के ऊपर। ओके, एवरीबॉडी ओके विद लियो? नेक्स्ट, चलो पे अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आई वांट यू टू लाइक सी वेदर यू कैन आंसर दिस। SPR Limited has been into media business since 2001. Okay, during the financial year 22-23, many notices were received by the company for hurting public sentiments and financial claims were filed against the company. Okay. कुछ litigation का सवाल चलो है, अब देख वर्ड यूज नहीं किया litigation, पर आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए उसमें। As an audit of the company, you requested the management for arranging the meeting with company's external legal counsel। तो आपने, आपके सामने ये सब कुछ चालू था, लोग केस ठोक रहे थे तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर, तो तुमने ये ही सोचा यार एक काम करते हैं, जो भी कंपनी का काउंसिल है, लीगल इन हाउस काउंसिल या कोई बाहर का है, तो सिर्फ एक मीटिंग करवा दो, मुझे एक बात करना। Management is of the view that such meetings are necessary in certain circumstances only. Can you list down certain circumstances? Please read the question carefully. Everybody, प्लीज पे अटेंशन ना। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक उसमें आइडिया आएगा, सर ठीक है पहले का हमको मैटर समझ में आए कि वो पब्लिक केस ठोक रहा है, दिस एंड दैट, फिर ऑडिटर को ऐसा लगा कि यार जाके मिलना पड़ेगा किसी काउंसिल से। द पॉइंट इज मैनेजमेंट आपसे ये बोल रहा है कि यार अभी गरज नहीं है, दिस इज नॉट दैट सर्कमस्टेंस वेयर यू शुड गो एंड मीट द काउंसिल। ओके, तो आपको ही पूछा कि भाई आप ही बताएंगे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है कि जहां पे एक ऑडिटर और एक लीगल काउंसिल कंपनी कैन गो एंड मीट टुगेदर। ओके, सो सबसे पहले द ऑडिटर डिटरमाइंस द मैटर इज ऑफ डैश रिस्क। कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस आंसर? सिग्निफिकेंट रिस्क, अभी लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लिटिगेशन बहुत ही बड़ा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। सेकंड, मैटर इज कॉम्प्लेक्स and the disagreement between management and the entity's external legal counsel। यहाँ पर तो आपको पहले जाके मिलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वापस, सर ऐसे ये कौन सा आंसर है पता है क्या? ऐसे तीन सर्कमस्टेंसेस आपके स्क्रीन के सामने कि जहां पे द मीटिंग ऑफ द ऑडिटर एंड द काउंसिल कैन बी डन वेयर अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। सबसे पहले सर अगर ऑडिटर को लगता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है इसमें, बहुत ही मटेरियल रिस्क है, which might be affected in the FS, which might be very useful to the intended users। second, matter is complex, and third क्या बात करें सर, अगर मैनेजमेंट और काउंसिल एक पेज पे नहीं है, then there might be what, a disagreement, और उस समय तो आपको जाके पहले मिलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? So orderly such meetings require management's permission
एंड आई हेल्प द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस। अरे ऐसा भी नहीं है कि अगर वो अलाउ भी करे आपको तो मैनेजमेंट का एक बंदा उस रूम में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा, इवन यू विल बी देयर, अ सीए विल बी देयर, एंड द लीगल काउंसिल will also be there. Okay, three of them will meet and do a discussion. You will not be given a full autonomy over there, but there will be a management representative which will be abiding you over there. Okay, so important question, please pay attention. Next, ये भी important है, this वाला, can you please tell me कि क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऐसे यूज हुआ है, क्या आप बता सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद? Quality Products Limited is engaged in manufacturing of bicycles. Okay, as a part of manufacturing activity, it sends raw material to some business entities and procures finished components from them. Okay. As on 31st of March 24, inventory is lying with such business entities of material. Being stat auditor of Quality Products Limited, how you will obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventories lying with such business entities? Can you please tell me one thing? Sir, इस पूरे पैराग्राफ में which is that one word which is coming again and again? Inventories, inventories, inventories. Okay, and can you please tell me which essay is this? ये कौन सा essay है? Please tell me which essay is this? सर जस्ट 2 मिनट पहले अपन डिस्कस किया था essay 501, तीन चीजें मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी उसमें: इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, नंबर वन इज योर इन्वेंट्री। नंबर वन इज योर इन्वेंट्री, इसके बारे में वो है। मैं आपको वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, इट पुट्स अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन ऑन द एग्जाम कि will know that you know something. You see what happens is usually some people, some students write general audit answer and just come out, and here मतलब हमें कुछ तो लिखे बाहर होगा, पर ऐसे जब आप लिखते हैं ना, and it puts a very great impression. Okay, so एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? एनीवन, एवरीबॉडी, वेरी गुड। नम्रता पठान, अंबेकर, आपके आफाक, आपका आंसर राइट है। ओके, चलो पे अटेंशन प्लीज। सर इसमें ऐसा हुआ है, ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट लिमिटेड है वो बाइसिकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड ये एज अ पार्ट ऑफ दैट इट इज सेंडिंग रॉ मटेरियल टू सम बिजनेस एंटिटीज एंड प्रोक्योर्स फिनिश्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम देम। मतलब वो बेचता है और जब वो खत्म करते हैं कुछ वो एंटिटीज, ये लोग परचेस करते हैं। 31st March में inventory is lying with such business entity, जो बाहर वाला है, are material. Being stat audit of quality products, how you will obtain evidence and existence condition? सर सीधी सी बात है ना, एक तो आप जाके चेक करेंगे, वहां पे स्टॉक काउंट करेंगे, या आप उनसे ही कंफर्मेशन मांगेंगे। So in accordance with requirements of 501, SA 501 of specific item which is ILS, I inventory, when inventory under the custody of a control of a third party is material to the FS, the auditor shall obtain SAAE regarding the existence and condition of that inventory by performing one or both of the following. Sir, कैसे करेंगे आप ये? How will I take into consideration कि वहां पे वो सब inventories है? So it's a very simple answer. Number one, request confirmation from the third party as to quantities and conditions, because आपकी सिस्टम में तो सब रहने वाला है. If you only confirm what? The physical quantity. Second, अगर आपको उसमें तसल्ली नहीं हो रहा है कि नहीं यदि कुछ भी भेजेगा, तो आप ही जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। उसको अपन बोल सकते हैं परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन भी उसमें आ सकता है, ऐसे नहीं कि आपको हमेशा इंस्पेक्शन ही करना पड़ेगा, आप ऑब्जर्वेशन भी लिख कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये दो चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर, अदर ऑडिट प्रोसीजर में और क्या क्या आ सकता है? नंबर वन एक तो आपको ऑब्जर्वेशन बताया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। सेकंड, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंटरी, आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज इन्वेंटरी इज बीइंग प्लेज्ड एज कोलैटरल, अगर आपने प्लेज गिरवी वगैरह रखा है तो आप ये भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हो उस पार्टी से। ऑप्टिंग अनदर ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्विस ऑडिटर, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जो वहां पे ऑडिटर है आप उससे भी क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो these might be some of the audit procedures which you might use in 501 in cross checking the inventory lying in the third parties go down. Okay, चलो पे अटेंशन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार एक काम करेंगे, आपने मुझे 500 के सभी के सब एसेस बताए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था वो आपका 600 का सीरीज था, 600, 610, 610 एंड 620। कैन यू प्लीज टेल मी 600, 610 और 620 क्या है? एनीवन? 600, 610 एंड 620, बहुत ही इजी है सर। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, using the work of another auditor, using the work of internal auditor, using the work of internal auditor, and using the work of an expert.
यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट. ओके, वेरी सिंपल. 600 के तीन ही ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. ओके, अच्छा और एक बात, सर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर हमको समझ में आता है, तो डिपार्टमेंट है हम उसका ये कर रहे हैं. एक्सपर्ट का भी हम समझ सकते हैं अगर कोई एक्सपर्ट यूज किया रहेगा. बट द पॉइंट इज व्हेन आई टॉक अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच ऑडिटर आर वी टॉकिंग अबाउट? Which auditor are we talking about in SS 600? Anybody can give me an answer? Give it fast, बहुत सिंपल है. So, अगर 610 में मैं इंटरनल ऑडिट का हेल्प ले रहा हूँ, आई एम सीइंग देयर रिपोर्ट्स. इन 620 में एक्सपर्ट का मदद ले रहा हूँ. तो कैन यू प्लीज टेल मी 600 में ये कौन से ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं? एनीबडी यू कैन टेल मी? एनीबडी यू कैन टेल मी? एनीवन हु कैन टेल मी व्हिच आर दिस पीपल टॉकिंग? सर ये लोग है ना ब्रांच ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं. ये ब्रांच ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं. ए आफाक, आफाक ने क्या लिखा वहां पे? एक्सटर्नल एक्सपर्ट लिखना है, एक्सटर्नल लिखना है तुझे? ओके, पे अटेंशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन. ओके, चलो मतलब एक बार सिर्फ गो थ्रू करें यार, गो थ्रू करें. सीए मुकुल इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बेज लिमिटेड, a large company engaged in the manufacturing of fast-moving consumer FMCG. After assessing the internal audit function of the company, CA Mukul decided to use the internal audit of the company to provide direct assistance. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? See, one thing is what, ऐसा नहीं कि वहाँ पे internal audit team बैठा है तो जाके आप हमेशा उनका इस्तेमाल ही करेंगे. You also have to go and see the quality of work. अगर आपको उसमें satisfy हो रहा है कि नहीं यार, I can to some extent use the work of the internal audit, then you can go ahead with that. यहाँ पे वही हुआ है. जो सीए मुकुल है वो सब कुछ स्टडी करने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि आई कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑडिट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट असिस्टेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप ध्यान देंगे. व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग? जो स्टैंडर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, वो वी आर टॉकिंग अबाउट एसए 610. यू ऑलरेडी नो दैट. Also comment whether prior to using internal auditor for direct assistance for the purpose of audit, CA Mukul required to obtain any written agreements or not? Question बहुत ही जबरदस्त है. Giving examples of procedures in which CA Mukul shall not use an internal auditor to provide direct assistance. Can I say one thing over here? Everybody pay attention. These people have asked three questions in the same question only. The first question is what do you mean by direct assistance, and also give the answer according to SA 610 that you have to give. Second, ये भी है कि रिटर्न अग्रीमेंट्स कुछ आपको लेने हैं या नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है कि जहां पे आप इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर नहीं सकते. तीन क्वेश्चन है. अगर आप तीन क्वेश्चन का आंसर देंगे देन ओनली द एग्जाम विल गिव यू मार्क्स. ओके, सो प्लीज जो आप पैराग्राफ लिखते हैं, डू एनीथिंग, प्लीज सॉर्ट इट आउट वेरी प्रॉपर्ली. सो कैन यू यूज दिस? As per 610, starting opening line उसको वही लिखेंगे. essay, to know the essay very properly, if you have done it very properly, please write the essays. Okay, using the work of internal auditor, direct assistance refers to those use of internal auditors to perform audit procedures under the direction, supervision, review of external audit. Okay, prior to using internal auditors to provide direct assistance for purpose of the audit, CM Mukul, the external auditor shall क्या क्या आप ये करेंगे, चेक करेंगे ये स्टेप लेने से पहले. obtain written agreement from an authorized representative of the entity. The internal auditors will be allowed to follow the external auditor's instructions, and the entity will not intervene the work, and the internal auditor performs the external auditor. समझ में आ रहा है? Because कि इंटरनल ऑडिटर आपका हुक्म क्यों हाँ बोलेगा रे? बोलेगा मैं तो एंटिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो तू मुझे इंस्ट्रक्शन देगा क्या? द पॉइंट इज जब एक्सटर्नल ऑडिटर को जब कुछ मदद चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले स्टैट ऑडिटर मैनेजमेंट से एक लिखवा के लेगा. देख भाई, मैं उनसे मदद ले रहा हूँ पर मुझे आपका उसमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए. You should directly give it to me. ये सबसे पहले, and you should also follow my instructions. That's the first thing that you should give written. Okay? Obtain written agreement from the internal auditor that they will keep confidential specific matters and instructed by the external auditor, and inform the external auditor of any threat to their objective. Very very important. very भारी point है. Pay attention please. तो सबसे पहले जो अपन ने रिटर्न अग्रीमेंट लिया ना, वो रिटर्न अग्रीमेंट अपन ने मैनेजमेंट में लिया कि भाई तुला मध्ये मध्ये करायचं नाहीये. जे पण आहे ते माझ्यामध्ये आणि इंटरनल ऑडिटरच्या मध्ये, तू मध्ये मध्ये येऊ नको. ये आपका पहला मुद्दा, ये आपका पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आपने सीधा इंटरनल ऑडिटर को ही खत लिखा. ए इंटरनल ऑडिटर सुन, क्या whatever it might be, whatever I ask you, anything, whatever you give me also, please keep it confidential.
ऐसा नहीं है कि चुगली करने का और जल्दी फोन लगाने का मैनेज कोई इसके पास ये डेटा है वो डेटा ऑल दैट नो ओके इफ दिस इज केस देन ओनली आई विल यूज योर सपोर्ट ओके एंड हाँ और एक बात अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर कुछ दबाव डाल कुछ थ्रेट लग रहा है आपको तो आप डायरेक्टली मेरे पास ये एक पॉइंट है फिर ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल्स इन विच सीए मुकुल शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर आप कौन से सर्कमस्टेंस में कौन से एग्जांपल में आप इंटरनल ऑडिटर को साथ लेके आगे नहीं जाएंगे सर ऐसा भी है क्या कुछ प्रोसीजर which involves making significant judgments in the audit judgment making is a personal decision अरे मैं थोड़ी उसको पूछ के कुछ करूंगा तो जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स करने का मानी आई विल यूज माय ओन आई विल नॉट टेक हिज सेकंड प्रोसीजर लीड टू हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहां पे आप उसको रॉन्ग बोलते हो risk of material misstatement the judgment required in performing the relevant audit procedure and evaluating audit evidence gather is more than what limited जहां पे आपको लग रहा है यार नहीं यार ये जो एरिया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा है कि एरर्स है फॉल्ट तो मुझे किसके ऊपर भरोसा नहीं है इवन फॉर दैट मैटर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर भी नहीं है तो मैं काम करता हूँ मैं खुद ही क्या करता हूँ उसको ऑडिट करता हूँ procedures relating to the work with which the internal auditors have been involved and which has already been or will be reported to management or those charged with governance by the internal audit function देखो एक ऐसा काम किया है इंटरनल ऑडिटर ने जो ऑलरेडी उसने रिपोर्ट किया देखो तो मैं उसको दोबारा क्यों उसमें इन्वॉल्व करूं यार उसने उसके ऊपर काम किया है ऑलरेडी so I have to use my brains I have to use my audit approach to use why will I take him again he's already submitted to management procedures relating to decisions section auditor makes in accordance with the essays regarding the internal audit function and the use of its work or direct assistance और एक बात है ये अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं आई डोंट लाइक द क्वालिटी ऑफ हिज ऑडिट वर्क ये तो आपका पत्ता वहां पे कट हो गया तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे ही नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ये आपके ऊपर डिसीजन ठीक है चलो ये था आपका ऑडिट एविडेंस पे अटेंशन प्लीज दिस वाज योर ऑडिट एविडेंस रिस्क असेसमेंट चैप्टर लेते हैं अभी दैट इज इंपॉर्टेंट विल टेक रिस्क असेसमेंट वाला ये आपके सामने है risk assessment and internal control very important chapter okay there are lots of questions in this okay but there are few questions which are repeated again okay want everybody to pay attention please I want everybody to pay attention please okay one second what is this sir Satranga Foods Private Limited is engaged in the manufacturing of pickles okay the auditors of the company have planned audit procedures in respect of recognition of revenue of the company. Despite that, there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by planned audit procedures. Identify and explain that particular risk in detail. Can anybody please tell me if this kind of question comes, what will go in your mind here? सर पहले तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया है कि ये लोग अचार बना रहे पिकल्स बना रहे फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर्स भी प्लान कर रहे हैं और किसके बारे में प्लान कर रहे हैं इसके बारे में recognition of revenue का बात चल despite that there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by plan तो तुम कितना भी करो तुम misstatements को पकड़ नहीं पा रहे हो identify and explain that particular risk in detail can I say risk का क्वेश्चन आ रहा है ये सर यस सर आ रहा है सबसे पहले आप एक काम करेंगे we will have a crux लिखेंगे बेस एंड देन वी विल गो ऑन टू दिस रिस्क जो आपका आंसर सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग ठीक है चलो there's a possibility that planned audit procedures may not achieve desired result तो कितना प्लान करो यार जो पहले अपन ने चैप्टर में किया इनहेरेंट लिमिटेशन रहने वाला ठीक है and fail to detect misstatements in revenue recognition and such a risk is called as detection risk so you know this control risk detection risk detection risk का मतलब क्या होता है सर एक ऐसा इनहेरेंट रिस्क है डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे सर दैट्स द इंपॉर्टेंट रिस्क ओवर देयर It's a 200 defined detection risk as the risk that are procedures performed by the auditor to reduce the audit risk to a very low level will not detect a misstatement that exists and that could be material. मतलब वो risk है जो ढूंढना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है. That is not there, but it is very important. So detection risk comprises sampling and non-sampling. तो एक काम कर सकता है वहां पे मस्त तरीके शायद से आपने किया भी रहेगा वो, but just for an overview glance डिटेक्शन रिस्क में अब मस्त तरीके से दो चार बनाएंगे एक आपका रहेगा सैम्पलिंग एक आपका रहेगा सैम्पलिंग और एक आपका रहेगा नॉन सैम्पलिंग जो बहुत ही इजी है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग प्लीज राइट इट डाउन ओवर देयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दैट क्वेश्चन सिर्फ वो चार्ट या फ्लो चार्ट देख के आपको समझ में आएगा उसका आंसर ठीक है
So sampling is the risk that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population was subject to same audit procedure. इसका मतलब क्या है? So it's a very simple thing. I'll just tell you over here. Okay, let us say 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, ये ऑडिटर 6 वाउचर आपके सामने, 6 वाउचर्स. ओके, so let us say due to time constraint you are telling कि नहीं यार 6 वाउचर नहीं करेंगे, मैं भी इसमें भी सैम्पलिंग करूंगा. So आपने आपका दिमाग लगाया, you use your professional judgment and you said let's do one thing. Okay, we'll do 2, 3, 4. ये 3 वाउचर में क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कौन से वाले वाउचर 2, 3 और 4 आपने बराबर चेक किया. तो पॉइंट ये हुआ 5, 6 और 1 में फ्रॉड निकला. 5, 6 और 1 में फ्रॉड निकला. रिमेंबर वन थिंग, सैम्पलिंग का एक बहुत ही सिंपल फंडा है. अब जब सैंपल सेलेक्ट करते हो, जब आप सैंपल आइडेंटिफाई करते हो, तो भाई साहब सैंपल हैज टू बी द रिप्लिका ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. और वापस लाइन बोलता हूं मैं, सैंपलिंग हैज टू बी द रिप्लिका ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. यू हैव टू मेक श्योर कि यार जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किए, जो सैंपल मैंने चूज किए, वो एक्चुअल में पूरे पॉपुलेशन एज इन द वाउचर्स को क्या करना है, उसको वो रिप्रेजेंट करना है. ऐसा ना हो कि उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है. So if the vouchers are different, okay, heterogeneous है, तो आपको उसके क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे. आपने शायद से पढ़ा भी रहेगा ये. तो क्लस्टर बना के मैं एक एक क्लस्टर में, एक एक ब्लॉक में से क्या करूंगा, सैंपल निकालूंगा, so that every sample has a chance of representing your entire lot. तो ये आपका हो गया सैंपलिंग वाला रिस्क. नॉन सैंपलिंग, it is a risk that the auditor reaches a conclusion, a very erroneous conclusion, for any reason not related to sampling risk. Like an auditor may reach an erroneous conclusion due to application to some inappropriate audit. तो नॉन सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग को समझ में है हमको, नॉन सैम्पलिंग में जो तुमने सेलेक्ट किया ही नहीं है, वो सबसे बड़ा रिस्क है. फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट रिस्क. सी, यहाँ पे रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन. क्यों? तो अगर मैं सब के सब लेता ना 6 के 6 सैंपल, तो शायद से मेरा कंक्लूजन से अलग रहता, बिकॉज मैं उसको बराबर डिटेल में चेक करता था. अभी मैं सैंपलिंग निकाला तो मेरा कंक्लूजन अलग जाना, बिकॉज दो 3 वाउचर मेरे हाथ में है ना, वो तो 3 के 3 बराबर है सर, वो गलत है ही नहीं उसमें कुछ. जो गलती हुआ है वो बाकी 3 में हुआ है, और जो मैंने निकाला नहीं है, ये रिस्क हो सकता है. ओके, एंड सेकंड, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जहां पे सैंपल नहीं निकाले, that the auditor reaches an erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk. Like an auditor may reach a very erroneous, very vague conclusion due to application to some inappropriate audit procedure. ऐसा by the end of the day, अब human being ही हो ना, so you did your audit procedure, but the conclusion what you reached was not up to that mark, was not actually right. तो ये आपका क्या हो गया, नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो गया. सो ये जो दोनों रिस्क है वो किस में आते हैं भाई साहब, वो किस में आता है, वो आते हैं डिटेक्शन रिस्क में. ओके, आई होप यू हैव रिटन दैट. आई होप यू हैव रिटन दैट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पे अटेंशन प्लीज. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाओ. ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट. पे अटेंशन. ठीक है, उसका ही है रिस्क वाला चैप्टर. द ऑडिटर ऑफ EFG लिमिटेड, ओके, a company engaged in tours and travel needs to obtain an understanding of the company's control environment. Okay, question किसके ऊपर है भाई साहब, यहाँ पे चल रहा है control environment के ऊपर. Understand what they want from you. To do this, the auditor evaluates whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior, and the strengths in the control environment elements collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control. अभी क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. मेरे हिसाब से तुमने तुम्हारे बुक में भी लिखा है सब कुछ. ऑल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. सो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज वन. यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन an understanding of the control environment. As a part of obtaining the understanding, the auditor shall evaluate whether, सबसे पहले, whether management has created and maintained a culture of honesty and the strengths in the control environment elements collectively provide. सर कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या क्या आता है, सबसे पहले द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड्स, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ट्रिपल ए, शायद तुमने बुक में लिखा रहेगा ये. एंड द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो 3 चीजें इसमें है. तो सबसे पहले गवर्नेंस स्ट्रक्चर, योर गवर्नेंस, हाउ एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गवर्निंग द एंटायर स्ट्रक्चर. फिर 3 चीजें, आपका एटीट्यूड, आपका अवेयरनेस एंड आपके एक्शंस ऑफ TCWG. और थर्ड, what tone as in what is the environment going around over there. Okay,
व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, आप देख सकते हैं बुक में। सबसे पहले वही कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, ऑनेस्टी वाला पॉइंट। सेकंड, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस such as management's consideration of competence levels for particular job, मतलब what is competence, the capacity to do a very skillful job. So whenever, let us say, there's a recruitment going on, the management has to see whether this guy is skillful, whether he can do this work or not. Third, participation by those charged with governance, whether are they participating, क्या वो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं, वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, what is the style, are they grassroots level, are they talking with everybody, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। सी मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल encompass a broad range of characteristics, organizational structure, the framework within which an entity's activities for achieving the objectives of planned, executed, controlled, and reviewed. Assignment of authority and responsibility, matters such as how authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting relationships are authorized. So basically वो hierarchy का बात कर रहा है तुम्हारा। एंड ह्यूमन रिसोर्स एचआर के पॉलिसी, आपका लास्ट का कंट्रोल एनवायरनमेंट का ये पॉइंट है एलिमेंट्स वाला, कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट रिलेट टू फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन, तो आप कैसे रिक्रूट कर रहे हो, उसको ट्रेन कैसे कर रहे हो, उसको पॉलिश कैसे कर रहे हो, तो ऑल दिस कम इन योर एचआर। ओके, अगर टाइम है आपका, थोड़े पास टाइम है, तो व्हाट आई फील इज प्लीज राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं एवरीथिंग, व्हाट आई फील इज जस्ट डू इट वेरी प्रॉपर्ली, राइट इट डाउन। ओके, सबसे पहले एक बार वापस करते हैं, सर ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। वापस कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, सेकंड क्या था, लिखेंगे प्लीज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, योर कैपेसिटी, स्किलफुल जॉब, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, कितना पार्टिसिपेशन है, फिर उनका स्टाइल कैसा है, फिर उसका आपका स्ट्रक्चर कैसा है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, और लास्ट में पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। प्लीज राइट डाउन दीस पॉइंट्स एंड लेट मी नो व्हेदर यू हैव डन इट। आपने पॉइंटर्स भी लिखे तो भी चलेगा, इवन इफ यू हैव रिटन द पॉइंटर्स इट इज मोर देन एनफ, even if you have written the pointer it is more than enough, please write it and write it now, everybody, yes or no, done, let me know fast। लिखेंगे पूरे एलिमेंट्स के पॉइंट, just write down one and one point over there, then we'll go on to this वाला question। okay, उसकी वही चैप्टर में से let me know whether you have done or not, whether you have done or not। okay, next, IT related risk can have an impact on audit, in what different ways such risk can have an impact on the audit of efforts। okay, they're talking about IT risk। okay, आपको ये आंसर लर्न ही करना पड़ेगा, it's important, because see, but if you have gone through this question, the answer also then you will be able to write it in the exam। okay, so IT related risk can have an impact on audit in very different ways। number one, impact on substantive checking, impact on controls, and impact on reporting। अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर बुक, आप भी लिखेंगे IT related risk impact on financial statement। please नहीं पढ़ा सामने लिया, please write this down, take a blank paper, just write it down, these are important points, because अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 घंटे में, ये रिकलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IT related risk can have an impact in different ways। number one, impact on substantive checking, impact on controls, and impact on reporting। please write this down। okay, so the first one, sir, impact on substantive checking, inability to address IT risk may lead to non-reliance of data obtained from systems। अगर आपने IT रिस्क को इग्नोर कर दिया तो भाई साहब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बढ़ सकता है डेटा के ऊपर। तो इसका ये मतलब रहेगा कि सर ऑडिटर को भी भरोसा रहेगा नहीं किसके ऊपर, वो डेटा के ऊपर। इन सच अ केस ऑल द इंफॉर्मेशन डेटा रिपोर्ट वुड हैव टू बी टेस्टेड थोरोली। तो अगर आप IT रिस्क, लेट अस से एक सिंपल यार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं था कंपनी के पास, सो ऑडिटर जब वो डेटा ले रहे हैं वो बोले यार इसमें एंटीवायरस क्यों नहीं है, so how am I very sure कि ये टेम्पर्ड नहीं हुआ डेटा आपका, किसी ने हैक नहीं किया है, किसी ने फिगर चेंज नहीं किया है, तो ये इम्पैक्ट कैसा सर, इम्पैक्ट जरूर आएगा। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन व्हाट, सब्सटैंटिव चेकिंग। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल, इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस। व्हाट इज नॉन रिलायंस सर, भरोसा उड़ जाएगा। ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, सिस्टम कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर बिल्ट इनटू एप्लीकेशन, जो एम्बेडेड है आपके सॉफ्टवेयर में वो भी रिलायंस वाले नहीं रहने वाले, उसके ऊपर भरोसा होने वाला नहीं है, बिकॉज आपने IT जो रिस्क है उसको इग्नोर कर दिया है। एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, तो जब सिस्टम कुछ फेंकेगा बाहर, जब रिपोर्ट करेगा वो भी गलत हो सकता है। तो तीन चीजें, एक तो इम्पैक्ट ऑन सब्सटैंटिव चेकिंग, तो इसका एक ही आप ये लिख सकते हैं, नॉन रिलायंस ऑफ डेटा, वन पॉइंट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लिखना क्या है उसमें। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का मतलब वही है कि जो उनके ऑपरेटिंग कंट्रोल्स है उसके ऊपर भी बराबर चल रहा है कि नहीं, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं हम लोग का। एंड थर्ड, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, इसका यही मतलब है कि भाई साहब वो जो रिपोर्ट बाहर फेंकेगा,
It might not be as per the regulatory requirements which is setting right now in the industry. तो ये तीन चीजें जो आपको आपके बुक में लिखने पड़ेंगे, आप देखिए अभी प्लीज राइट डाउन प्लीज. इम्पैक्ट ऑन सब्सटैंटिव चेकिंग, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग. सर एक कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन कैसा है? IT related risk can have an impact on the audit. Okay, so in what different ways such risk can have an impact, ये यही अपन ने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, चलो IT related risk. Okay, so can we go on to the next part please? एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, then we'll switch on to a new chapter. Okay, companies are increasingly using data analytics, okay, which is the need of the hour. Okay, in fact a lot of companies are going into what field? Data analytics. Okay, for managing the operation, breaking down the data, sorting the data, okay, grouping the data. Okay, जैसे भी client का requirement है. Auditors can also obtain good results by using the data analytics. Okay, what are the tools and techniques used by the auditors in applying the principles of data analytics, and in which areas data analytics can be used? दो क्वेश्चन पूछे गए कि अगर एक ऑडिटर को डेटा एनालिटिक्स यूज करना है तो भाई साहब वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक यूज करेगा और कौन से एरियाज में वो यूज कर सकता है डेटा एनालिटिक्स. सर अगर आपने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन तो आप ये आंसर ही नहीं कर पाओगे, तो इसमें ठोक भी नहीं सकते कुछ. okay? तो उससे अच्छा है कि आप बिंदास ये क्वेश्चंस को करके जाएंगे प्लीज. सबसे पहले सर, tools and techniques the auditors use in applying principles of data are known as CATs. इसका ऑडिटर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स. लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर राइट नाउ, इतने सॉफ्टवेयर्स है कि जहां पे एक ऑडिटर क्या कर सकता है, उसका हेल्प ले सकता है. डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल आइडिया, एसीएल फॉर एग्जांपल आइडिया. अब आपको मैं आइडिया फुल फॉर्म में बोलता हूं, I think I might have written it somewhere. Just give me just one sec. Yeah. Interactive data extraction and analysis. This stands for your idea. You can just write down if you want to write down over there. Interactive data extraction and it's a part of your data analytics. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं वहां पे interactive data extraction and analysis. Okay. चलो, coming back to the question, please. Back to your question. So, how in which area will I use it? तो स्क्रीन के सामने check the completeness of data and population that is used in either test of controls, selection of audit samples, recomputation of balances, re-performance of mathematical calculation, and list of journal entries, evaluating impact of control deficit. इसमें आप क्या कर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इतने सब चीजें डेटा एनालिटिक्स से परफॉर्म हो सकते हैं. सबसे मेजर पार्ट तो यही है भाई सब, री-परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिर बैलेंस को रिकम्प्यूट करना, सिलेक्शन ऑडिट सैंपल. बिकॉज़ आप ऑडिट सैंपल्स को एक एल्गोरिथम देंगे, आप एक कोडिंग देंगे उसको कि आई वांट सच सैंपल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, जो मैं आपको जस्ट 10 मिनट पहले कहा. तो उससे अच्छा गोइंग एंड सिंगली पिकिंग अप द सैंपल, यू आर ट्रेनिंग द कंप्यूटर ओनली, भाई यू ही कर, यू आर ब्रेकिंग डाउन द डेटा. सो ये आपका काम कम हो जाएगा. You can do more quality also audit. So all these things you can do by the computer assisted auditing techniques. Okay. चलो. और एक चैप्टर लिया है मैंने, और एक चैप्टर लिया है. This also will do. Then we will. Okay. Audit of items of FS, which I think many people leave out. Okay. There are two chapters which are I think what a nightmare for everyone, and this is number one, which I don't think you should leave out. Whatever question भी काम कर लेंगे तो भी चलेगा. And the second is the entities वाला audit. Okay, तो वो तो easy है. Hospitals, your hotels and all that वो आप इतना कर सकते हैं. Colleges, universities for that matter. The audit of items में मैंने कुछ handpicked questions दिए, तो वो एक बार करेंगे. Then we go. Okay. सबसे पहले वापस बोलो, couple of questions to go. I want your complete attention. Okay. Can we read this? The FS of XYZ Limited reflects long-term borrowings from the banks, financial institutions, leasing, and hire purchase companies. Additionally, the company has issued debentures to its 1,000 members to raise funds in accordance with the provisions of the Companies Act 30. Your वापस, the FS of XYZ Limited reflects long-term borrowings. इसलिए सब बैंक से लिए, financial institutions से लिए, leasing and hire purchase companies. Additionally, the company also issued debentures to its 1,000 members to raise funds. पैसा चाहिए था उनको. The money raised by issuing debentures is also reflected in long-term borrowings. As the stat auditor of XYZ Limited, CAX wants to verify that all the borrowings on the balance sheet represent valid claims by the banks or other third parties. Suggest a few audit procedures in this regard. खतरनाक. मतलब सर इसमें हम ये एक ही आइटम, अभी यही बात क्या इन लोगों ने कि जितना भी बोरिंग्स तुमने किया है, पैसा उठाया तुमने, कुछ बैंक से पैसा उठाया,
तो भाई साहब जो क्लेम्स मांगे हैं बैंक्स ने कि हाँ इसने इतना पैसा लिया है, डिबेंचर उसको पैसा मांगते रहेंगे, तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये अमाउंट सेम ही है? बैंक्स बोल रहा है यार 500 करोड़ का पैसा देना है, तो ठीक है, पर आप कैसे एज अ ऑडिटर आप कैसे वेरीफाई करेंगे इसको? ये ऑडिट प्रोसीजर आपको पूछा है, तो यू माइट राइट this general answer is this, but there is a specific answer and it's very simple also. Okay, you can stick to these kind of answers. Okay, the way they are writing it. Number one. So सबसे पहले रिव्यू द बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग का मिनट चेक करना पड़ेगा कि उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो सी यू माइट अंडरस्टैंड इन ऑडिट एविडेंस आल्सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर बोर्ड ऑफ मीटिंग के मिनट्स आर इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें से बहुत जानकारी मिलेगा। नंबर वन इज दिस, सो लोन कितना चाहिए था, किससे लोन लिया है, ऑल दैट थिंग्स विल एंड बैलेंस आल्सो आपको वहां पे वेरीफाई करने को मिलेगा। ठीक है, any debt commitments are there. Second, check the details of loans recorded to loan agreement. Verify that the borrowing limits. Second, it's a very simple audit procedure. Just go and check the documents of loan. Okay. Roll out and obtain independent balance confirmation of all the borrowing. Simple है, 505 करेंगे. Just go and verify with the bank and all that. या कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं. Verify details of leases, hire purchase creditors recorded to underlying contract. Contract check कर सकते हैं आप उनकी लोन के बीच में. डिबेंचर एग्जामिन ट्रस्ट डीड, आपको इतना तो पता है सेक्शन 71, डिबेंचर जब आप इश्यू करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्ट डीड बनता है, डिबेंचर ट्रस्टी वहां पर रहेगा, तो उसके बीच में जो डीड बना है कितना इंटरेस्ट है, कितना मैच्योरिटी पीरियड है, वो सब कुछ उसमें दिख जाएगा आपको। व्हेन डेट इज रिटायर्ड एंश्योर दैट डिस्चार्ज रिसीव ऑन असेट्स सिक्वेंट डेट। ये भी एक है कि जब भी एक डेट कंप्लीट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे चार्ज क्रिएट किया गया है, मेक श्योर द चार्ज इज सेटिस्फाइड। ओके, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, द असेट शुड कम बैक टू द कंपनी, द नेम। Obtain return representation आपका 580 ऐसे, and all the liabilities which have been recorded represent a valid claim by the lenders। तो एक ही है, जो भी पैसा मांग रहे हैं आपने क्लियर कर एक लाइन में बता रहे कि भाई जितना भी है आप मैनेजमेंट से बात करके कुछ भी और तू लिख के दे बाबा मुझे, अगर तू बोल रहे हैं तूने पैसा दिया है उसको तू लिख के दे मुझे, आई वांट ऑल द रिटर्न कंफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मी। तो दिस इज अ वेरी जनरल आंसर बॉस, बट स्टिक टू सम आंसर। ओके, इसमें से दो तीन पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे। सर बोर्ड मीटिंग का पॉइंट है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं, आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद आप ट्रस्ट डीड चेक कर सकते हैं डिवेंचर्स के बारे में। तो उसके बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब एक बार डिस्चार्ज करके जब आप पैसा देंगे तो आपको चार्ज पेड किया गया है, वो वापस आ रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट अपना आंसर खत्म हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे बड़ा आपका ताकत है। कुछ भी वहां पे हो, अगर मैनेजमेंट कुछ भी बोल रहे हैं आपने सीधा उसको बोल दिया कि भाई तूने जो भी बोला ना वो लिख के दे, खत्म। दीज आर ऑल योर ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, चलो, पे अटेंशन प्लीज। ये वाला करेंगे अपन, this also we'll do, pay attention. It's a very simple this question. Preliminary engagement activities include certain activities to be performed by auditor while planning an audit. Discuss such activities briefly. How performing such activities is assist auditor. So what are the preliminary activities? तो सबसे पहले आपको इतना पता है कि जब भी अपन ऑडिट शुरू करते हैं, the first essay which comes into play is 200 and 210, that's the engagement. Okay, performing procedures regarding the continuance of the client relationship. आपको अगर if both of you are on the same page, you can continue with the relationship. Evaluating compliance with ethical requirements including independence, आपको भी चेक करना पड़ेगा whether your independence is not hampered. Next आपकी understanding of the terms of engagement, that is essay 210, ये आपके preliminary क्या हो गया activities, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देंगे। CAN engagement partner of LPS Associates is planning for audit of a large firm. As a part of preliminary engagement activities being performed in this regard, he wants to ensure that compliance with independence requirements is other. How shall he form a conclusion that audit firm complies with the independence requirement? कैसे comply करेंगे आप? बहुत simple है। सबसे पहले obtain relevant information from the firm to identify and evaluate any threats. अगर threats है तो आप back out करेंगे, आपने last lecture में किया था ये। You can do one thing, then back out from it, or you can give a very opinion जो आपके हाथ में है, your disclaimer opinion adverse or qualified. Okay, evaluate information or identified breaches. ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा वो डेटा रिलायबल है क्या नहीं है, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट। अगर थ्रेट्स है तो आपको एक तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको रेसिपल लिखा है क्लियर कट, एक तो आप वो एलिमिनेट करो थ्रेट, एक तो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
the engagement partner responsible for directing and supervising the work of engagement. The team includes both experienced members and several few trainees. Additionally, certain areas of the audit have been identified as high risk, such as revenue recognition and inventory valuation, due to recent changes in ABC. What factors, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आपका, what factors should the engagement team members consider when determining the NTE of direction, supervision, review of the engagement team work? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो एंगेजमेंट टीम को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई आपको ऐसा काम करना है, ये कॉम्प्लेक्स वर्क है, आपको यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले सर, whether before allocating any engagement team members, I will see one thing: the size and complexity of the entity, the area of the audit, उसके बाद assess risk of material mission में कितना है, errors of fraud ज्यादा है क्या, and the capability and competence of the individual team member. अगर कोई fresher है तो मैं उसको एकदम complex काम नहीं दूंगा, okay? I'll give him a very simple work. The complex work I will leave out to the most senior members in my team. Okay, समझ में आ रहा है? ये कुछ questions थे. Uh, I'll be rolling out more PDFs also of this. Audit में अगर आपको कुछ करना है, if you want to finish or revise something, I'll compile all the questions. मैं इसमें more question add कर दूंगा, and please उतना ही करेंगे आप, ठीक है? More like put more focus on writing question answers. एक target रखेंगे आप, दिन का कुछ question करेंगे. Even if you start from today also, you'll be able to do it till your exam. You'll be in a very comfortable position. Okay, trust me on this thing. मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार का नोट्स भी आप कौन से भी नोट्स रेफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मॉड्यूल इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू. एंड सेकंड इज प्लीज डू द क्वेश्चन आंसर. व्हेन आई से क्वेश्चन आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल क्वेश्चन आंसर्स, आरटीपीस एंड सजेस्टेड आंसर्स. दिस थ्री आर मोर देन इनफ. ओके, मोर देन इनफ. अब ने इतना भी किया, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू राइट ऑडिट. ओके, बट the things you should avoid in audit is only reading. That's the worst mistake you will do. Worst. अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ना तो नहीं होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलेगा? बटन FM करेगा, मैं रोल आउट कर दूंगा. आई रोल आउट वन PDF, अपने उतना भी किया तो भी चलेगा. इज मोर देन एनफ. ओके, चलो. ओके, नेक्स्ट माय लेक्चर विल बी लॉ विल बी वन. प्लीज डू कम ऑन लॉ. आई विल अनाउंस द डेट ऑन योर ग्रुप्स. ओके, चलेगा? स्टॉप हियर फॉर द डे.